Hello everyone. Welcome to the lecture on Structure of DNA Part 1. Structure of DNA. Most people know about DNA as a complex molecule which carries the genetic code. Most will also have heard of the famous double helix. तो DNA का स्ट्रक्चर एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के जैसा है जो कि एक जेनेटिक कोड को कैरी करता है एंड हम ये भी जानते हैं कि डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है. द डायग्राम इज ऑफ द होल स्ट्रक्चर विच शोज अ टाइनी बिट ऑफ अ डीएनए डबल हेलिक्स. मीन्स ये जो हमने पोर्शन लिया है वो एक डबल हेलिक्स का पार्ट है, लेकिन इसके अंदर सारी जो कि एसेंशियल यूनिट्स हैं डीएनए की वो हमें मिलती हैं. द एसेंशियल यूनिट्स क्या हैं टू फॉर्म अ डीएनए? वो हैं शुगर, फॉस्फेट एंड बेसिस. अब शुगर और फॉस्फेट तो बैकबोन बनाती है एक डीएनए मॉलिक्यूल का, और बेस पेयर्स जॉइन करके उन बैकबोन्स को एक डबल हेलिक्स फॉर्म में शेप देती है. वी विल सी लेटर. आज हम इस लेक्चर में जो यूनिट्स इम्पॉर्टेंट हैं टू फॉर्म अ डीएनए उसके बारे में स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट इज़ एक्सप्लोरिंग अ डीएनए चेन. तो उसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट मोइटी है वो है शुगर. सो द शुगर्स इन द बैकबोन. The backbone of DNA is based on a repeated pattern of a sugar group and a phosphate group. The full name of DNA, deoxyribonucleic acid, gives the name of the sugar present, deoxyribose. तो यहाँ हम बताना चाह रहे हैं कि जो नेम है DNA, फुल फॉर्म है deoxyribonucleic acid, और ये आता है from the sugar that is present in DNA, which is deoxyribose. So deoxyribose is a modified form of another sugar called ribose. तो दूसरा जो शुगर है राइबोज, उसका मॉडिफाइड फॉर्म है deoxyribose. Ribose is the sugar in the backbone of RNA, that is ribonucleic acid. So this is the ribose sugar. We can see here the furanose type of structure, cyclic structure है. C1 पर OH लगा हुआ है and C5 is CH2OH. Now each of the four corners where there isn't an atom shown has a carbon atom. तो ये सारे कार्बन एटम्स हैं जहाँ पर OH, HOH ये अटैच्ड है. So that's ribose. Now deoxyribose, as the name might suggest, is ribose which has lost an oxygen atom, deoxy. So here is the deoxyribose sugar, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिर्फ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट रादर दैन OH विच इज़ एट द पोजिशन 2. तो 2 पोजिशन यानी C2 पर हम देखते हैं कि जो राइबोज में OH था वो डीऑक्सीराइबोज में सिर्फ H है. सो ये जो शुगर होगा ये प्रेजेंट होगा इन DNA. The only other thing we need to know about deoxyribose or ribose for that matter is how the carbon atoms in the ring are numbered. तो नंबरिंग कैसे होगी इन शुगर एटम्स में, इन शुगर मॉलिक्यूल्स में, वो हमें देखना है. द कार्बन एटम टू द राइट ऑफ द ऑक्सीजन as we have drawn the ring is given the number 1, and then we work around to the carbon on the CH2OH side group, which is number 5. तो start करेंगे with carbon number 1, which is
ऑन द राइट हैंड साइड और उससे हम नंबरिंग करके क्लॉकवाइज जाएंगे रीचिंग टू CH2OH ग्रुप। तो जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो C2 पर हम पाते हैं कि ऑक्सीजन इज एब्सेंट इन डीऑक्सीराइबोस। Notice that each of the numbers has a small dash by it, that is 3 dash or 5 dash. पर हम कैसे पढ़ेंगे इनको? We read 3 dash or 5 dash as 3 prime or 5 prime. Attaching a phosphate group. So after studying the sugar moiety, we come to the next important unit, which is a phosphate group. The other repeating part of the DNA backbone is a phosphate group. A phosphate group is attached to the sugar molecule in the place of OH on the 5 prime carbon. Now look at the structure. हमारे पास डीऑक्सीराइबोस शुगर है और उसका C5 पर था CH2OH और इस CH2 के OH ग्रुप पर फॉस्फेट ग्रुप आकर अटैच होता है. सो फॉस्फेट विल ऑलवेज बॉन्ड विद शुगर. So this is the very important bonding which is taking place to form the backbone of a DNA molecule. The third part is attaching a base. So the third important moiety is a base. These are called bases because that is exactly what they are in chemical terms. They have lone pairs on nitrogens and so can act as electron pair donors. These bases attach in the place of OH on 1 prime carbon atom in the sugar ring. So if we see that C5 of sugar is attached to phosphate and C1 is attached to a base. So the bonding takes place on C1 with the base and C5 with the phosphate group. So here the base is attached at C1 prime. What we have produced is known as a nucleotide. A nucleotide is a molecule having phosphate, that is P, attached to sugar S, attached to the base molecule forming PSB bonding, and this will repeat forming a nucleotide unit. We now need to have a quick look at the 4 bases. Here are the structures. The bases are the purine bases and the pyrimidine bases. The 2 bases, cytosine with C, thymine with T. The other 2 are adenine with A and guanine with G. So here we see that in all the bases, the N, the nitrogen and the hydrogen in the blue color, this is the place which they join with other molecules onto the deoxyribose sugar. So the nitrogen and the hydrogen atoms shown in the blue on each molecule show where these molecules join to the deoxyribose. In each case, the hydrogen is lost together with the OH group on the 1 prime carbon atom of the sugar. So the hydrogen from the base and OH from the sugar is lost and it forms a bond. So this is a condensation reaction where 2 molecules
joining together with the loss of a small atom or a molecule, and it forms a bond with the deoxyribose sugar. For example, here is what the nucleotide containing cytosine would look like. Now, what is cytosine? Cytosine is a base. So, on the left is phosphate, which has bonded with the C5 prime of deoxyribose, and on C1 prime we see the cytosine base joining or bonding with the deoxyribose on C1 prime, and so it forms a nucleotide. We shall continue with this repeating pattern of the nucleotide to form a double helical structure of DNA.